Hello, in this video we are going to understand class 12th accounts volume 3rd chapter comparative and common size statement. These two statements are the tool which help to analyze the financial statement of balance sheet and profit and loss statement. On the basis of that, we conclude and it is possible to take decisions. As we already discussed about the comparative statements and common size statement, in respect of balance sheet and profit and loss, we also have to understand the meaning. When financial statement figures for two or more years are placed side by side to facilitate comparison, these are called comparative financial statements. That means आप ऐसी स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें आपके टू या टू मोर देन टू years balances are given so that comparison is possible और जिसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकें, आप इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकें और इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सकें, सेम फर्म में कंपैरिजन कर सकें या विद आउटसाइड ऑल्सो कंपैरिजन इज़ पॉसिबल टू एनालाइज द पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी. So here in this picture, comparative balance sheet format is given. First of all, you have to write down on the top that is comparative balance sheet. Then particulars, note number, date, particular note numbers and date of the year on which financial statements are based. Let's suppose we have a financial statement details of 2012 or 2013 because comparison is possible on 2 years or more than 2 years figures. Then you have to generate absolute change column and percentage column. Then you have to assign total 5 columns 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, one column is based for the main particular headings on which our balance sheet items are included, as we already know that liabilities and about the assets also. In this part, they have the categories like liabilities include shareholder funds, non-current liabilities and current liabilities. Total assets includes current assets and non-current assets. So in second column you have to generate column number A. That means balances belong to 2012. In third column you have to generate B for the balances of 2013. Then in fourth column you have to do B minus A. That means you have to generate C column, and C is calculated when you have to subtracted items from B to A. That means B minus A is equals to C. Then on the fifth column you have to generate D, but how it is calculated? C जो आपने calculate किया है divided by A into 100 because it is a percentage column. Okay, so A, B, C, D, only 4 items are included here, and here you have given the details how you calculate A, B, C and D. Again I'm repeating, 2012 and 13 amount belongs to A and B. Then absolute change belongs to C, that means B minus A. Then percentage change belongs to C by A into 100. Then you will conclude the balances with D. Okay, so let's take the example. And one more thing, the balance sheet of the liabilities is always equal to the balance sheet of assets. एसेट्स और लाइबिलिटी के जो बैलेंसेस आते हैं वो हमेशा
जो है इक्वल आते हैं। इस एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। आपके सामने एक्स लिमिटेड के कुछ बैलेंसेस गिवन है, जिसमें कि आपके कुछ पर्टिकुलर फिगर्स गिवन है अबाउट लाइबिलिटीज़, अबाउट एसेट्स, on which subheads also included. So then note number, then balances of 2013 and 2012. Okay, 2013 is a current year as per this question, because it is our more current to 2012, and 2012 we have to consider it as previous year. Okay, so in column A we have to write down previous year, in column B we have to write down current year. Okay, first of all we are taking one example that belongs to a share capital. Let's check. 2012 में उसका बैलेंस गिवन है 5 लाख, एंड देन 2013 में उसका बैलेंस गिवन है 10 लाख। आपने उस बैलेंस को एज इट इज़ ए एंड बी कॉलम में पुट कर दिया। देन यू हैव टू फाइंड सी, दैट इज बी माइनस ए। 10 lakh minus 5 lakh is equals to 5 lakh. Then you have to calculate C by using the same formula, C divided by A into 100. That means 5 lakh divided by A, that means 5 lakh. 5 lakh से 5 lakh क्रॉस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, into 100 करेंगे, that means the answer will be 100%. Same concept is belong for the liabilities, for the assets, and then you have to check here the total of the balance sheet of liabilities is equal to the total of assets. Okay, so by taking this example we have understand the approach of comparative balance sheet. And what about common size statement? Common size statement are the statements which have common base. यहाँ पर बहुत सिंपल था, आपने ए बी सी डी को कैलकुलेट किया। कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको बता रही है कि आपने अब एक कॉमन बेस को लेना है, और कॉमन बेस क्या होगा? लाइबिलिटीज़ के लिए लाइबिलिटीज़ का टोटल कॉमन बेस होगा, और एसेट्स के लिए एसेट्स का टोटल कॉमन बेस होगा। लेट्स टेक द एग्जांपल। ऑक्सफोर्ड का क्वेश्चन गिवन है, ऑक्सफोर्ड लिमिटेड का। इसमें कुछ पर्टिकुलर बैलेंसेस गिवन है 12 और 13 का, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर। आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। अब आपको उसको समझना है। सबसे पहले आप वही पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज को जो है क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले आपको सेम एज इट इज़ बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्रिएट करना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, बिकॉज प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बैलेंस को हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। सो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में आपका फर्स्ट आ जाता है शेयर कैपिटल अंडर ऑन द हेड ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। ओके, शेयर कैपिटल एज वी अंडरस्टैंड, equity share capital and preference share capital total will be the answer for share capital. So here for 2012 16 plus 2, that means 18 is the answer for share capital. Here 16 plus 2 is also 18, that means share capital for both the years are 18. So we have to placed in previous year, in current year, दैट इज़ 12 एंड 13। पहले आपको प्रीवियस ईयर लिखना होता है, फिर आप करंट ईयर लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और मैंने आपको बोला है कि यू हैव टू टेक अ बेस। सो द बेस फॉर द लाइबिलिटी इज़ 40, फॉर द बेस ऑफ द ओके, सो द बेस फॉर द लाइबिलिटी इज़ 40 फॉर द 2012, फॉर 2013 इट इज़ फॉर 45. Then how you calculate? It is calculated like this way. First of all you have to understand about 2012. 2012 में आप कैसे इस बैलेंस को निकालेंगे? मैंने आपको बोला है अब एक कॉमन बेस होना चाहिए, उसी का ही टोटल क्या होगा? कॉमन बेस हो जाएगा। सो 18/14 to 100 आपको सभी का परसेंटेज निकालना है, दैट इज़ 45%। ऐसे ही आप 2013 के लिए इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वैल्यू विल बी 18/45 into 100 is equals to 40%। आपको ये दो फिगर समझ में आ गई कैसे आई है, क्योंकि ये परसेंटेज निकालना बहुत इजी है। 18 के लिए आपने ये वाले बेस को लिया, आपने
करंट ईयर के लिए आपने ये वाले बेस को लिया, आप इजीली पहुंच गए हैं। हम एक और एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। आपके सामने रिजर्व और सरप्लस के बैलेंसेस गिवन है। देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का जो 2013 का 5.40 है, जो कि आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और करंट ईयर के लिए ये क्या है, 4 का वैल्यू गिवन है, जो कि आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एंड आफ्टर दैट अब आपको क्या निकालना है, बैलेंसेस लेने हैं इन 2 फिगर्स के लिए। 4 के लिए आप 40 का बैलेंस लेंगे, आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं, 4/40, देन आंसर विल बी 10% as you checked here. Okay, for 5/5.4 then the balance will be, क्योंकि इसका जो बैलेंस है, इसका जो बेस है वो 45 है, क्योंकि ये टोटल आपका करंट ईयर का है, तो आप इसको 5.40 डिवाइड बाई 45 इंटू 100, दैट मीन्स द वैल्यू विल बी 12। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारी कॉन्सेप्ट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। देन टोटल ऑफ लाइबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ एसेट्स, एज यू कैन चेक 40 फॉर द 2012, फॉर 2013 it will be 45 and 45, like this. Okay, it is very easy because it has only 3 marks average, but it is very important. There is a choice between comparative and the common size statement. Same wise you also have to maintain concept for the profit and loss statement, because format is already given to you. You only have to place a common base in case of common size statement, or simple formula is given in case of comparative statements. Only 4 steps was given there, A, B, C and D. A is for previous year, B is for current year, C is equals to B minus A, and D is equals to C divided by A into 100. Concept was very easy. Only place some values related to balance sheet and common size statement of profit and loss account.